did, and Pakistan didn't. Here we need to understand, for Pakistan there is still an opportunity. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। मेरा नाम है ज़ोया मानी। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू व्यूअर्स आवर चैनल। सो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो पे हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्सेस बांग्लादेश की। तो यार मतलब प्यार है, मोहब्बत है, कोई फाइट कोई जंग नहीं है। स्पेशली वो भी हमारी कंट्री है, ये भी हमारी कंट्री है। तो यार ये प्यार है, ये मोहब्बत है आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी तरफ से आप सब लोगों को ये प्यार है। तो व्यूअर्स, आज देखते हैं बांग्लादेश की GDP प्लस इकोनॉमी कैसी है और स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी GDP कैसी है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है GDP और बांग्लादेश के आगे थोड़ी सी मतलब डाउन हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि इस वीडियो में कंपैरिजन क्या किया है और इस वीडियो में क्या बताया है। तो यार आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में, बातें करते हैं। इधर ही जा रहे हैं, जा कहीं भी नहीं रहे हैं वीडियो के एंड पे। तब तक के लिए हम लोग को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हाँ पे जूम कर देना थोड़ा सा। हाँ यार शाबाश यार, कसम खुदा की, वो क्राइम पेट्रोल नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, तो यार प्लीज इस वीडियो को जो है ना लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के जो है ये आज ODI मैच है। Pakistan and Bangladesh, the two South Asian countries, which together was a single nation before 1971, previously known as East and West Pakistan. In 1971, Pakistan was 70% richer than Bangladesh. But now the tables have turned. Today Bangladesh is 45% richer than Pakistan. You see, after breaking up in 1971, both the countries were in a bad state. But in comparison, Pakistan had more resources than Bangladesh. In fact, Pakistan was better off than most post-colonial states in many terms, like economy, human development, infrastructure, and industrialization progress till the mid-1980s. At the same time, Bangladesh had to start from scratch and build the political and economic structure to stand as a country. So it was a very slow start for them. But today when you look at these two nations, you will see a very different picture. On one hand, Bangladesh's remarkable performance during the past decades transformed the country's economy. Despite problems like political instability, poor infrastructure, corruption, and insufficient power supplies, the Bangladesh economy has grown 5.8% per year since 1996. Even during the 2008 financial crisis, Bangladesh's growth was resilient. On the other hand, when you look at Pakistan, in 2020 their public debt went past 87% of the GDP, and the country's total external debt and liabilities rose to $113.8 billion in the fiscal year 2020. Today the country spends 1/3 of its federal budget on repayments of these loans. At present Bangladesh's exports are double than Pakistan's. Also their currency, which is the taka, is nearly double than that of Pakistan's rupee. And the foreign exchange reserves held by Bangladesh are more than $41 billion, which is again double than Pakistan's $20 billion. Now what Pakistan has more than double of that of Bangladesh is the debt to GDP ratio. Bangladesh has a debt to GDP ratio of around 35%, whereas Pakistan's is 80%. And having a high debt to GDP ratio is not a good thing for any developing country. Now the question here is, how did a country like Bangladesh, which during its formation was predicted to fail and return to Pakistan, has achieved much more than them? Well, one of the main reasons is Bangladesh's industry. The country has become the second largest manufacturer of the ready-made garments. It is the main item of export, which accounts for 84% of total exports of the nation. This has happened because Bangladesh has a massive labor force, which is the 8th largest in the world. And they are capitalizing upon low-skilled labor force in the labor-incentive export industries. It's the same strategy that many of the other Asian nations used for their industrial sector, specifically in manufacturing. Today the garment industry in the country provides direct employment for 4 million workers, and indirect employment to nearly 10 million people. It is estimated that 80% of workers in this industry are women, and this has a good impact on women empowerment in the country. Moreover, their garment industries benefited from custom-free access to many Western countries. As you know, Bangladesh is on the list of least developed countries, and many rich nations in the West removed the export duties to help the developing countries. This makes made in Bangladesh garments more competitive. You might be aware,
Pakistan also tried to be an export giant in the garment industry. But despite being a cotton-growing country, it has failed to increase the exports beyond $10 billion. What makes this even worse is, Pakistan is now importing cotton. Due to lack of innovation and policies, the country is unable to capitalize upon its agricultural resources like cotton, and increase its exports of textiles and other products. Another reason behind Bangladesh's growth is, they primarily focuses on human development and economic growth. As a result, they are ahead of Pakistan in areas like women empowerment, passport index, literacy ratio, and also microcredit financing. You see, where Bangladesh's spendings are mainly focused on human development aspects like education and healthcare, Pakistan spends a big chunk of its budget on the military, leaving health and education far behind. Also, Pakistan is often criticized for terror financing and money laundering. And they are in a grey list of Financial Action Task Force. Because of this, investors are not confident to invest here. And definitely Bangladesh is a more investment-friendly country than Pakistan. Now, let's look at some numbers again. In terms of GDP, Pakistan was superior than Bangladesh for many years, but today's numbers really speak up for Bangladesh. And the same goes with the GDP per capita. This really shows us if you prioritize the right things, it will eventually lead you to growth. And that is what Bangladesh did, and Pakistan didn't. Here we need to understand, for Pakistan there is still an opportunity. The average age of its citizens is just 22 years. And this gives Pakistan an advantage in the demographic dividend. But this will be only advantageous if Pakistan prioritizes human development. When people will get good education, healthcare and other things, the productivity will eventually increase. Today Pakistan isn't exactly failed, but we cannot deny that it is on the verge of failing. So they need to understand, looking at Bangladesh's development model, what is really required for social and economic development. So, what do you think about this video? Tell us in the comments below. And if you are new to this channel, please consider subscribing. Thank you. जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा यार। स्पेशली मैं बात करूँ तो वाकई यार पाकिस्तान की जीडीपी बहुत ही डाउन चली गई यार। वो बता रहे थे कि 245 बिलियंस पाकिस्तान और स्पेशली 395 बांग्लादेश, 1100 समथिंग पाकिस्तान और 1900 समथिंग बांग्लादेश। यार पाकिस्तान की जीडीपी और बांग्लादेश की जीडीपी यार बहुत फ़र्क हो गया है। स्पेशली वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बने हुए कुछ ही साल हुए हैं, अराउंड 51 या 49 के अराउंड साल है, लेकिन पाकिस्तान को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है। सो यार पाकिस्तान की जीडीपी इस तरह एकदम नीचे चली जाना, आई थिंक कुछ समझ नहीं आती। सो वीडियो के स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा इनको फन ये लगा था, उसमें जो नोट गिरा रहा था उनका हमें बच्चे याद आ गए थे, वो नाचने वाले जो नोट बच्चे जो होते थे ना, वो शादियों में पैसे लौटाते थे तो ऐसे नोट गिरते थे, बच्चे पागल हो जाते थे। ये बच्चे तो मैंने वो भाई साहब, वो जो वीडियो में भाई साहब है ना, उनके पास पैसे गिरे भी हैं 1-2 नोट, लेकिन उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे नोट थे इसलिए। तो बस मुझे ये छोटा सा फन नजर आया यार। बांग्लादेश की जीडीपी स्पेशली बहुत यार ऊपर जा रही है। उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है, उनकी करेंसी बहुत ऊपर जा रही है। स्पेशली यार पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में कपास है, ठीक है, जिसका काम हो रहा है, जिसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है चाइना से, ठीक है। वहाँ पर कपड़ा बन रहा है, पाकिस्तान का कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल, इसलिए पाकिस्तान को प्रॉफिट है क्योंकि पाकिस्तान में कपास अपनी है, अपनी कपास उग रही है और इधर से ही एक्सपोर्ट होके जा रहा है। लेकिन अगर बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ की स्पेशली वुमेन्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है बांग्लादेश को ऊपर पहुँचाने की। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है बांग्लादेश को आगे लेके जाने की, और स्पेशली बांग्लादेश को ऊपर पहुँचाने के लिए अगर किसी का हाथ है तो बांग्लादेश की वुमेन्स का हाथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है बांग्लादेश कंट्री को, स्पेशली बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल को ऊपर लेके जाना। और स्पेशली अगर हम कहीं भी कंट्री, किसी भी कंट्री में चले जाएँ, इवन के किसी भी कंपनी का अगर हम ब्रांड उठाएंगे तो मेड इन बांग्लादेश लाजमी लिखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लास्ट वीडियो थी, ठीक है, उस पे हमने जो रिएक्शन किया था वॉल्टन पे, तो वॉल्टन इंडस्ट्री थी, कितना कुछ वॉल्टन बना रहा है। और स्पेशली अगर बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो भी बांग्लादेश जो है बहुत आगे जा रहा है। बांग्लादेश को रोकना भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये उन्हीं वुमेन्स की बात कर रहे हैं जिन्हीं वुमेन्स के ऊपर ये कहते हैं वुमेन्स,
मीम्स आई हुई है इस पे वुमेन। तो यार मतलब नहीं देखो मैं अच्छा, मेरा तो एक फन फन हो था, गया। लेकिन बांग्लादेश की वुमेन्स Hard बहुत worker बड़ी है। स्ट्रगलर हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है अपने मुल्क को आगे लेके जाने की, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। टेक्सटाइल को आगे लेके जाने की, अपने मतलब मुल्क का दिफा करने की। स्पेशली उनके टेक्सटाइल मिल है, उनकी वॉल्टन फार्मेसी है, वॉल्टन मतलब एक इंडस्ट्री है। इब्ने सीना इनकी फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी एक लैब है यार। स्पेशली उनमें भी जो इनका किरदार अदा किया है, स्पेशली वो वुमेन्स नहीं किया है यार। तो मतलब जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं Speechless अपनी कर तारीफ दिया। सुन के थोड़ा सा चुप हूँ बस। इसमें तुम्हारा नाम नहीं है, तुम पाकिस्तानी गालो, मैं बांग्लादेशी गर्ल्स और बांग्लादेशी वुमेन्स की बात कर रहा हूँ यार। वुमेन्स आर इस तरह तो बहुत सारी वुमेन्स आ जाती हैं, लेकिन वो आ घर पे ही जाती- होती हैं। तो व्यूअर्स घर ये पे बहस शुरू हो होती गई, है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम क्योंकि लोगों को women's दीजिए इजाजत। हर वुमेन हार्ड वर्क होती है, बस इतना ही। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो Share, like और कमेंट जितना कहना चाहते हो दिल खोल के अल्लाह दो यार। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।